I met Guruji in 1996 when I retired from the army. At that time, I had a lot of problems health-wise. My children had not settled yet, not married. And when I retired, I was making a house in Panchkula. ते मैं अरदास की थी, मेरे मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा. My son had lost his hearing when he was 3 years old. 3 दिन के बाद अरदास के बाद मैंने मैसेज आई गुरुजी तो that he wants to meet me. I had never heard about him, never met him, but I got the message from him that he wants to meet me. After 4 or 5 days, I was called, where Guruji was given a reception in the Chandigarh Golf Club. I also met him. When I looked at him, a very handsome person, beautifully dressed up, कोई माथे के ऊपर तिल नहीं सीगी, कोई माला नहीं सीगी. At first I thought that he's a model, very handsome. But जिस तरह मैं गुरुजी ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਕਰ. I was attracted to him like a magnet. My house was in Sector 4, Panchkula. Guruji was staying in Sector 2, Panchkula with Jan Ahuja. ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਿਟਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ. He appeared as a stranger to me for 10 days. 10 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ. And there were 5-6 other couples also sitting in the bedroom. ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ 40 ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾੜੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ. She says yes, because she used to keep those sarees packed in tissue paper. That's how she remembered the exact fact. तेरे कोले इन्ना थोड़ा सोना भी है. गुरु जी मेरे को सोना बहुत है, पर पत्थर जोड़े हुए हैं, कोई डायमंड है, कोई रूबी है. So I really can't tell you the exact amount, the gold that I have. ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੋਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 4 ਕਨਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਚੀ, ਪੈਸਾ ਸੋਨਾ ਖਿੱਚਿਆ. This is the total amount of what he got. फिर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ when we went outside, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ. ਜਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਗਏ, there was a chit lying in my wife's cupboard mentioning the entire amount what Guruji had mentioned. ਉਹ ਚਿੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ W and B. ਕਹਿੰਦੀ ਆਹ W ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ this is the amount which I got in white. ਆਹ B ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ that's beautiful. Naturally, you don't pay a tax for this, the beautifully hogi. And for the first time throughout our life, you were always faithful to me. On the eve of your to retire ho gaya ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ. ਤੇ I said ਝੂਠ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ, for them diamonds are forever. ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ. So you know the whole business will go for 6. Anyway, ਜਦ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣ, ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ. ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ. ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ. ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਕੀਮ, allopathy, all systems of medicines were tried. Nobody was able to cure him. ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਜੀ. ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਜੀ. ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗਿਆ.
ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ ਪਰ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਿਆ। ਐਂ ਕਰ ਹੁਣ ਕਾਕੇ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਕਲਿਆਣ 20%। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਦਾਮ ਤੇਲ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਮੂਲਿਨ ਆਇਲ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਬੇਲ ਆਇਲ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ 10 ਦਿਨ ਪਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਪਾਇਆ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ midnight he gets up and tells me I'm getting a terrible earache in both ears. He had been an expert in lip reading also. मैं क्या गुरु जी तक कहते सी कल्याण hearing ठीक हो जानी, इतने तो उल्टा काम हो गया। नेक्स्ट डे व्हेन आई वेंट टू द हॉस्पिटल, डॉक्टर मेरे को सुन लगे तो कहना तू कैसा है, एजुकेटेड आदमी है, तू तेल पाया, तेन पता तेल इन्फेक्शन जाएगी कान दे विच, कान होर खराब होएगा। मैं कहा जी डॉक्टर साहब होर की खराब होना है, सुनता तो है नहीं, उन्हें इन्फेक्शन की कर लूगी। कहता आई विल क्लीन हिज एयर, उन्हें कान कुन साफ किए। ते कहते ऑन ट्यूसडे इज माई ऑडोमेट्री टेस्ट, तू अपनी ऑडोमेट्री टेस्ट कर। He did his odometry test, छोटा जा कमरा स्टूल ते बैठा, लैपटॉप दे मंगो बटन जैसी के कान दे विच फ्रीक्वेंसी पाई, नॉइज दी which you and me cannot hear outside, but he heard it. वो गिर गया। I thought that he had slipped by mistake. Again he got up and sat on the stool. फिर वो गिर गया। मैं कहा what happened? कहता पापा the noise was very loud, मैनू चक्कर आ गया। He heard this loud noise after 25 years, a quarter of a century. I didn't believe it myself. जिस तरह मैं बाहर आया, कार दे विच वो भी बैठा, मैं भी बैठा, and we reached the house. He got it from the car first, and I got a little later. When he was at a distance of approximately on the driveway, approximately a distance of 15 feet, he again got my pictures. I called out his name. He looked back and said, yes, Papa. That was a confirmation to me that I have not been hypnotized by Guruji. He has got his 20% hearing back. ये कौन कर सकता हैगा? ये रब भी कर सकता है। And Guru Granth Sahib लिखा हैगा, God is Guru and Guru is God. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ फिर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ उसी दिन मैं गुरु जी को गया। मैंने दूरों देख के ही gives me a smile. कहते हाँ ठीक हो गया? मैं कहा हाँ जी गुरु जी थोड़ी कृपा नाल। कहता देखिया अज मैं तेनों रब दिखाया। मैं कहा गुरु जी मेरे वास्ते तुसी हो रब, क्यों गुरु ग्रंथ साफ कहता है गॉड इज गुरु एंड गुरु इज गॉड। हुण टुट के भक्ति विच पै जा। समझे मेरी गल? मैं क्या गुरु जी समझ गया। Now, you know, I used to hear so many satsangs that brought me a confidence, that created a faith in me, a faith in my Guru. Because जब तक थोनू faith नहीं हुंदा, जिन्ना मर्जी कहानियां सुन लो, आगे काम हुंदा ही नहीं। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹਾਂ the officers here told me that every year you're going to your guru, spend the new year with us. I said मैं सोचदा है, मैं बात नाल भी गल कीती, कहंदी हाँ this year we spend the new year with our friends, the new year ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। मैं बड़ा खुश होया। मैं कहने सार विस्की मुस्की पीती, न्यू ईयर दे है विस्की कबाब, डांस डूंस करांगे, ढोल बजणगे, and you will feel wish at midnight a happy new year.
उसी दिन सवेर नूं की होया, my wife makes me a cup of tea every morning. She made a cup of tea, kitchen च गई, गर्म पानी कीता, विच teaspoon दे विच चाह पत्ती पाई. When she looked at the concave side of the tea spoon, she ਜਿਹੜਾ tea ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਪਤੀਲੇ ਚ ਪੈ ਗਈ, and ਜਿਹੜਾ dust ਸੀਗਾ, it gave the shape of a cobra snake in the concave position of the teaspoon. फिर दूजे चम्मच पीता टीस्पून कीता, फिर गल हुई. Then she came to me, मैं आ देख, मैं कहा झूठ के क्यों तू है जे गल्लां च पाई होईयां सवेरे सवेरे. I came up and took a tablespoon this time, which is much bigger. मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੀ ਪੱਤੀ ਪਾਈ, ਚਾਹ ਦੀ ਪੱਤੀ ਮਾਰੀ और पतीले च देख सिटी, and the powder again gave the image of a very distinct nag. Gurji is a bhagat of Lord Shiv, और शिव दे गले विच नाग हुंदा. मैं एक दिन वाइफ नूं कहा, मैं कहा this is a message from Guruji that he does not want us to be here, he want us to celebrate the new year with him in Delhi. ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਦਿੱਲੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, where all the people had assembled. Everybody was dancing except me and my wife. गुरु जी कहते आंटी तू भी डांस कर. कहते गुरु जी मेरा लक दुखता है, for the last so many years मेरे तो डांस नहीं किया जा. Again Guru ji told her to dance. We never got it. Then he gave a very sort of a dirty look and said dance. मैं तो मेरी wife dancing floor पे आ गए. शब्द कीर्तन was on. Buntings, gubare gubure lage hoye, everybody was dancing, feeling very happy. So did we. We also started dancing. Raat de 12 baje, lights went off. After half a minute or so, the lights came on. Broon patan lage, and guess this, my wife's backache for this last so many years, it vanished. It vanished. Ode wal jab main kar aaya, I gave a ceremonial burial to the painkillers, the profane, in my garden. ये है गुरु जी की कृपा. केड़े बहाने सन गुरु जी ने बनाना सीगा. गुरु जी never used to say कि मैं हुण तेरे आ क्यों करना है, मैं आ करूँगा. It was just one of those, his way of method was such. कोई भी गुरु जी कई लोगों दे ना गुप्त इलाज कर जाते सी. He is treating गुरु जी, treating the patients, but the patient never knew about it. This was my wife's side. फिर मैं एक दिन, a friend of mine, गुरु जी मैनू कहते हुंदे सी नई संगत लिया कर, कहंदे तेरा भी तैनू भी ब्लेसिंग्स मिलणगी बहुत, और जिहड़ी संगत आएगी उन्हां नूं ब्लेसिंग्स. So I made an attempt ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕਰ ਜਾਣਾ ਜੁਨਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰੈਕਟਲੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ. ਸੋ ਜਦ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, I used to look for them ਕਿ ਆ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ. The eyes were moving about, and one day Guru ji gave me a very dirty look कि तू गुरु कोले बैठा, तेरी अखां खब्बे सजे जांदियां हैगियां. How could I tell Guru ji कि मैं जिहड़ी संगत नूं मैं बुलाया, have they come or not? Then ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ my कोई रोमी शोमी आज नहीं. I started concentrating on the Shabd and Kirtan. Felt so nice, felt so contented, and that is the day my journey in spiritualism started for the benefit of me and the family. एक दिन हाँ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ a friend of mine, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਸ ਭੇਜਣੇ ਆ in Russia during the winters, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ, I would like to grow the roses there. ਮੈਂ ਕਿਹਾ you're most welcome. ਕਹਿੰਦੇ before that I would like to test the soil. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਚ ਬੈਠ ਚੱਲ. ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ what is this? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ. ਕਹਿੰਦਾ what nonsense.
लगा चंगे गाने मैं मैडोना मोडोना आप पहले तो आर्मी सीगे we were serving all the time yes sir you know listening to the boss all the time whether right or wrong. Now we are independent, let's make the most of it what we lost in the army. मैं कहा यार मैं तो सत शब्द कीती नहीं होना है, this is my way of my life, I've changed completely. कहना मैं फिर गुरु जी सत्संग करना गया, कहना I don't believe in gods and gurus, सब झूठ बोलते हैं, सारे पखंडी है। कहते जब थे मैं मेरे अपने अखा नाल नहीं देखता, I won't believe in your guru at all. जिस तरह मैं सत्संग कर रहा सीगा, शॉर्ट ऑफ करनाल एक ट्रक आया पिछों, hit my car from the backside. The weather was fine and I was going very slowly. मेरी कार tumbled over the divider. Badly, चंगी तरह कार तब खत्म ही होगी, असी भी गंदे बेहोश हो गए। In the meantime, people came, pulled me, my car. ऐसे दोनों बेहोश पे ऐसी साढ़े पर पानी पूनी पाया। I came to my senses first. मैं दोस्त वाले देखे लंबा बैठ गया, मैं कहा ये तो हवा गया। Anyway, after some time he got up. Believe it, मेरी कोई हड्डी नहीं टूटी, ओदी कई कोई हड्डी नहीं टूटी। We looked at each other and like, today I believe that your guru is God, because the way this accident happened, we would have been both dead and gone. And but here we are awake. कोई सट नहीं लगी, कोई today I believe that your guru is God. Anyway, ऐसे रात में रेस्ट हाउस रहे, कार was broken and पुलिस वाले भी आ गए, सब कुछ आ गए. You know, well stage managed. I didn't have to go here and अपने आप ही होते, पुलिस वाले आ गए, अपने आप ही होते, कई witnesses आ गए, so that my insurance claim could be. I mean, it was all stage managed by Guru. 7th जुलाई ਨੂੰ फिर मैं गुरु जी को गया, कहते फिर बच गया हैगा। मैं क्या, हाँ, तेरी कार करनाल को इत्थे सीगी? मैं कहा हाँ जी। तेरे नाल तेरा दोस्त भी सीगा? उन्होंने यकीन आ गया कि रब हैगा? मैं कहा हाँ जी। उन्हें आ कपड़े पाए हुए सी ते तू आ कपड़े पाए हुए सी? मैं कहा हाँ। तेरा आ शब्द कीर्तन चल रहा सीगा? मैं कहा हाँ जी, यही शब्द कीर्तन चल रहा सीगा, मैं सुन रहा सीगा, मैं तेरा एक्सीडेंट देख रहा सीगा। Good enough. The fact that he told me each and everything about me, it means he was listening to us. फिर उन्होंने गुरु के ओल्ड मैन गुरु जी को लाऊंगा, मैं कही गुरु जी was listening to, seeing us, listening to की हो रहा है, शब्द कीर्तन चल रहा है, that means he very well knew even accident होने वाला. Why didn't he save us? You know what the old man tells me? आने वाले दिन तेरे नाल कोई बुरी घटना होनी सीगी, ओ गुरु जी ने आ तेनू ए तेरी सट लगा के, I mean ए तेरे एक्सीडेंट करके, और आने वाली दुर्घटना सीगी वो तेरी बचा। See how Guru looks after his sangat. And I would say कि जदों भी थोड़े नाल कोई प्रॉब्लम्स आंदा हैगा, you must say तेरा पाना मीठा लगे, your will is sweet, because in that will something good has happened to you. ਹੁਣ कई लोग मैनू कई कहते I feel so angry कि मैनू कोई क्रिटिसाइज करता हैगा, मेरे चुगलियां करता हैगा, and I tell them, जिस दिन तेरी चुगली हुंदी हैगी, you should be thank you to Guru and God. वो कहती किस तरह? मैं कि if somebody says something against me, right, और मेरी चुगली करे, ते ओदी थोड़ी जी भक्ति ओदे स्पिरिचुअल बैंक तो खत्म हो जाती है और मेरी स्पिरिचुअल बैंक आ जाती है. With the result, I have
This is called passive bhakti without effort. ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਟੜ ਗਈ। ਹੈਵ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਦਿਸ? ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਨੇ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਘਟ ਗਈ, ਐਂਡ ਸਮਥਿੰਗ can happen to him. So you see, is the question of give and take in bhakti also. So remember, the day somebody does not criticize you during the month, thodi chugli nahi kiti, it is a loss to you. It is a loss to you spiritual wise. Okay, you got the point. As a matter of fact, there are 5 evils you have to be careful about: anger, ego, pride, lust, and greed. The fact that you feel happy कि आज मेरे ने किसी ने चुगली की थी, you should feel happy, contentment. With the result, your anger, ego, pride has been destroyed. You understand? I have learned this all from Guruji's Shabad, Kirtan, and meeting various people. Guruji kanda si, when you meet various people, it is not by chance. It is not by coincidence. It has been designed by the Almighty that He has learned something from you, and you have learned something from Him, maybe now or in your previous janamas. Then another thing is, my son-in-law was in UK. He had gone on deputation to the Commonwealth to look after global warming of the 54 nations of the world. So he came along with the delegation from the UK to India, and at this moment the Commonwealth says कि ये नो सिर्फ तो हमेशा थोड़ी कोई भेजती नहीं है। This time he will not come. The government of India insisted that he knows his country very well. We suggest that you send him. Oh, Ayaji, it was Saturday in Delhi. The office was closed. So he went to spend some time with the doctor in the Apollo hospital. Jado coffee pee rahe sige, biscuit kha rahe sige, unna da director aa gaya kam vich. The doctor was young. Oh God, he got nervous कि मेरी नौकरी छुट्टी होगी। उनकी किता एकदम prescription लिखती, this test, this test, this test, this test. So my son-in-law told him, मैं सारे टेस्ट करा के आया, this no use. कहता नहीं तू यार मेरे को आया हैगा, I like to do your सेवा also. उन्हें करा लीजिए, वो लेबोरेटरी के बंदे चला गया, ब्लड ग्रुप ले लिया. After 2 days, he rings up my son-in-law कि come, I want to speak to you. There's something wrong with you. Then how can it be wrong? मैं सब कुछ टेस्ट करा के आया. The moment he came, he told him कि जिन्ने भी मैं टेस्ट लिखे सीगे सारे ठीक, पर आर टेस्ट कैंसर दा मैं नहीं लिखा सीगा. वो by mistake the technician in the laboratory उन्हें करता, and it says there is cancer in the body somewhere. See how that mistake was made. फिर I spoke to Dr. Pandav of the AIMS. वो भी गुरुजी दा बड़ा जब भगत लगा. वो कहता तू आजकल ता मेरा साडा सर्जन ता बाहर गया छुट्टी ते हैगा. But there's Shashi Bahel from the Sloan Keating Cancer Research Institute, United States. He happens to be here today, and he's a friend of his. कहता मैं तेरी गल करा देना, ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਬਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ. Let's try it. He spoke to him and he sent the son-in-law must come here next day. He examined him. He says there's no way out. He has to be operated upon. ਰੁਪਈਆ 5 ਲੱਖ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, and I will carry out his operation. On next day I was told by the hospital that he need not come. The doctor has gone on some duty to Bombay. When he returns, we'll let you know.
गुरु जी ने मैंने एक फ्लैट दिलवाया से सतवाड़ी which is next to बड़ा मंदिर. So we used to stay over there. और कुछ नहीं, हर शाम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ. My son-in-law was there. So one day we came over there and I was a little sad and sitting over there. I said in my mind, Guruji, today I require you in a physical form and you are not here. Guruji man intuitively ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਗਿਣ. What has counting of the steps to do with the cancer of thyroid of my son-in-law? Anyway, I went and started counting the steps. As you get with the Shivji Parmurti, at the moment you get into this mandir, there are 5 steps. And you know what the 5 steps told me? Anger, ego, pride, lust, and greed. These are the things you got to get rid of life. And I could literally hear till today the voice coming into my ears. अंदर गया, गुरुजी में मत्था टेकिया, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੇ in those days the langar was down below and there are 13 steps. Those 13 steps when I was coming down, ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा ही तेरा. These are 13 words and 13 steps. जिस तरह से हेठां बैठे, you know, 4 people used to sit together. Yeah, sit together. एक थाली हुंदी सी, तेरा दिता खाना है, तेरा दिता पीना है. Oh, nice. Nothing is mine. It's all yours. It's your grace. लंगर खा के फिर बंदा बाहर जाता हैगा. Again you got to climb the 9 steps. और गुरुजी, those again I could hear, 9 दरवाजे बंद कर, 10वां दरवाजा खुल जाएगा. And what are those 9 doors? Those 5 evils, they enter your body through the 9 openings in your body. 2 akh, 2 nak, 1 kan and 2 down below. They are the 9 openings. 9 darwaze band kar, 10वां darwaza khul jayega. And what is that 10वां darwaza? Jo mange Thakur se, sohi, sohi. This is the philosophy of our Guru. Guruji never used to speak. He used to convey his messages through his Shabd Kirtan. और ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਬਲ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, if those stones can speak the philosophy of my Guru, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਣਾ. Doesn't this prove to you that he's God? These are small little examples of life that must hit you. There is a Rabb. It is within us as to how our relationship with him. Guru mere sang karna hai. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, शिव जी ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ. Believe it. My son-in-law asked my wife, Mama, I see the eyes moving, I see the lips moving and smiling. My wife says, yes, you're right. She looks at me as I'm seeing the same thing. And in the meantime, बहुत संगत बार अंदर आ गई, कैमरे खोले,
videos लिए, and this particular photo of Shivji, eyes opening, mouth opening, is on the internet today. Although मैं क्या से गुरुजी, today I require a physical presence, and you're not here. गुरुजी ने अपनी अखां, शिवजी ने अखां खोलियां, मुंह खोलिया. It was a feeling to me and my son-in-law कि गुरु मेरे संग करना. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ एक शशि बैल came and कहते 5 लाख जमा कराओ. happens to Saturday बैंक बंद, मेरी जेब 3 लाख रुपया पिया सीगा. Same evening my daughter's friend came, कहते 5 लाख. कत्थों उन्होंने पता लगे कि 5 लाख की मैंने लोड़ है, कत्थों ही आई गया. So my daughter refused. ਕਹਿੰਦੀ we will wait for the operation. I said, I'm glad you refused. ਜੇ ਤਾਂ white money ਹੁੰਦੀ ਤੇ son-in-law ਦਾ operation successful ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ. ਜੇ ਉਹ black money ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ operation ਸੀਗਾ, it would not have been successful. So it is so nice, I mean, so nice of my daughter that she did not accept. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, but huge money was spent. The boy is very good, the girl is very good. 3 ਸਾਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ marriage ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ. ਚੌਥੇ ਸਾਲ that marriage, that love between husband and wife starts dwindling, and a stage comes when they both separate. ਕਿਉਂ? ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲੱਗਿਆ. ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੈਡਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਪਰ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੈਡਿੰਗਸ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ. And at times I noticed that ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ. Then I asked somebody ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ. ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ. ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਂਦੇ. That is what I learned. ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਯਾਦ ਆ ਗਏ. ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ, you have become an officer, be honest. Your honesty is your investment. Your investment in the karma. Karma ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, karma ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਣਾ. And God love. Being in the army, had a lovely life. Seen a number of wars. ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ. ਜਿੰਦੇ ਵਿੰਦੇ with both the arms, both the legs, ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ with my children to enjoy the other half of my life. ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ. Then again what happened, once I was sitting with Guruji, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਨਹੀਂ ਰੱਖੜੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ 22 ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਈਂ. there's a boy, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਰੱਖੜੀਆਂ ਵੇਚਦਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਨੋ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਓ ਕੌਣ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ. 2 days before the Rakhi, I went to him. ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, but at one particular redi I saw the photograph of a girl. मैं देखी, मैं कहा this must be the boy. I could just peep in through the girls and the ladies. Being a gent, I couldn't really force my way through. So ultimately मैं कहा गुरु ने मैंने किया तू मिलना हैगा ते मैं कुड़ियां ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ. I said but why ਉੱਥੇ ਵੀ there's so many ladies ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਬੈਠੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਰੇਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀ 1-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਬ੍ਰਦਰਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਖੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਦਰਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਵ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਇਆ.
कई सालों तो ਜਿਹੜੇ ਪੈਣਾ ਪਰਵਾਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਅਬ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ this was the lesson that Guruji wanted to give me ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ so many years back I had a tumor in my brain and I had lost my eyesight. The tumor was removed, the eyesight came back, and for a year I was perfectly all right. ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਟਿਊਮਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ. This time I was lying like a vegetable in the PGI hospital for 2 months. ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇੰਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਖੂਨ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਆ ਪਿਆ. ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਵੀ ਸੋ ਯੂ ਬੈਟਰ ਟੇਕ ਹਿਮ ਟੂ ਯਰ ਹਾਊਸ. ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਹੈ. ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ the lady's husband was a peon in the Punjab and Haryana High Court. ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ. ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੌਣ ਵੇਲੇ 10 ਮੂੰਗਫੜੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਪੀਸ ਦਿਆ ਕਰ और दाने कला दिया कर और छिलके अक दे लगा देकर और एक 10 दिन करने में when he was still in coma in his house. और माँ ने दिल को 10 मुंह बड़े लगाए. He came back to life from coma. After a few weeks he again went to the hospital to tell the doctor I'm perfectly all right. And how can you be right? Again, they carried out the MRI of his brain. There was koi naam nishan. It was like if a knife has been passed through a butter. Tumor removed and was perfectly all right. एक कौन कर सकता तुसी मैनू आप दसो तुसी सब सुन रहे हो मेरे एक गुरु कर सकता एक गुरु कर सकता और कोई नहीं कर सकता. My sister, she's a doctor in Safdarjung Hospital. Allergic to namak, mirch, masale, all foods except boiled vegetables. Allergic to wheat, rice, everything. Good enough. वो भी गुरु जी दी बहुत भगत. उन्हों her son who was studying in Kharagpur IIT कर रहे थे. छुट्टी आया तो बुखार हो गया बुखार उतर गया. जब उन्होंने बुखार टेस्ट करा था he was diagnosed with leukemia, blood cancer. Being a doctor, she knows what blood cancer is. She was a doctor, eye specialist in Safdarjung Hospital, Delhi. Of course, retired now. And 7 दिन ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਿੱਤੀ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੰਜੇ ਚ ਮਾਰਤੀ ਚੌਂਕੜੀ ਗੋਦੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ photograph. She did not tell the key. She told them this is the problem. ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ. And ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 4-5 दिन ਦੇ ਬਾਅਦ resident doctor came. He said, ma'am, he got you so sad, you know. He said, this thing was happened to my son. He said, me, आजकल लेबोरेटरी में झूठ हो जाती है पैसा कमाने वास्ते. Next, he got the blood slides, took the blood off from his son, sent it to Tata Memorial, Bombay.
various hospitals where it was carried out. They said this, he is perfectly all right. There is no trace of leukemia at all. मैं उसी शाम ਨੂੰ मैं फिर गुरु जी कोल आया, मैं मत्था टेकिया गुरु जी ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਭੈਣ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, खुश है ना? मैं कहा हाँ जी गुरु जी खुश है। तेनू पता ਉਹਨੂੰ कैंसर ਸੀਗਾ? मैं कहा हाँ। मैं ਉਹਦੀ बीमारी ठीक करती है? मैं कहा हाँ गुरु जी बिल्कुल ठीक। एक कौन कर सकता विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी रेडिएशन, a matter of 4-5 days। जब मेरी भैन ने गुरु जी की मनन लगी पर मंगया नहीं। And this thing happened। गुरु जी कहते होंगे सीगे मेरे तो मंगया ना करो, मैनू मन्या करो। क्यों? जब तुसी मंगते हो then it is to is business। मैं तेरा पाठ किया तो मैंने आ दिया। नो नो, वो तो जे तुसी ऐ करोगे थोड़ी बड़ी हुई चीज भी खराब हो जाती। And this reminds me when I met Guruji for the first time। He was very happy। मेरी चंगा मेरे नाल गल्लां गुल्लां कर रहे सी। मेरी वाइफ कहती आ हुण गुरुजी दस चीज़ ने वेरी गुड मूड। जिस तरह मैं गुरुजी को गई उन्होंने चरण मैं दवाउण लग्या, बिलीव इट, ये 10 चीज़ां मैं जिहड़ियां मंगणियां सीगियां मैं भुल ही गया। That was the biggest miracle which has happened in my life, and that's why I would say it was the beginning of my journey। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ सब कुछ ही मिला गया, सब कुछ मिलता गया, मंगया कुछ भी नहीं, मंगया कुछ भी नहीं। So I mean, ever since I retired and met my guru, life felt nice that here I come across a human being who's really a God। और गुरु जी तो even without you knowing कई भी आਉਂਦੇ ਸੀ कि गुरु जी कोले एक दिन ची खट लेंदे सी। गुरु जी कभी मेरे ऊपर दिल आ गया। एक दिन एम्पायर स्टेट असीं बैठे सीगे। I hope I'm not taking too long। I hope I'm taking। Please continue, please। Because गुरु जी मैनू कहते हुंदे सी in short। और जब मैं खत्म करता से गुरु जी कहते हुण आ भी दसदे, हुण आ भी दसदे, आ भी दसदे। So being from the army, when I started earlier my satsangs, I used to speak mostly in English। तो गुरु जी कहते तू अंग्रेजी सत्संग करके तू सत्संग का स्वाद खुद ही ले रहा है, ये तेरे सामने लोग बैठे इन्हों भी स्वाद दे। Then I started speaking in English, Hindi and Punjabi। As मैं to begin with थोड़े मुश्किल लगे, but then Guruji had told me about it। And you know, in life, lot of problems will come to you। Any problem that comes to you, be happy, because all this has come from the divine। And the moment you feel happy and accept willingly, the passage of time, your problems will be over। They will be over। मैं एम्पायर स्टेट बैठा सीगा ते मिस्टर व्हाट इज नेम इज चोपड़ा शर्मा, वो गुरु जी दे राइट लेग दबा रहे सी चरण। ते वो गुरु जी नूं कहंदा, गुरु जी कदे कदे मैं मेरे सामने काली बिल्ली भी मैनूं क्रॉस करना चाहुंदी है। कहंदे जी साडे समाज दे विच काली बिल्ली क्रॉस कर जाए ना, कोई बुरी दुर्घटना होने वाली हुंदी है। गुरु जी कहंदे शर्मा तू क्यों है बहमां च पिया होया, जे तेनू तू बलीव भी करदा तू वाहिगुरु कह दिया कर, जे हरिओम कह दिया कर, तेरा हरिओम बड़ा कि तेरी काली बिल्ली बड़ी। फिर कहंदे गुरु जी कदे कदे मेरी अख भी फड़कन लग जाती हैगी, ये गल ठीक नहीं है। He is asking this question to Guruji। Guruji had also called me and I was pressing his left leg। मैंने थोड़ा ठुड्डा जा मार के to draw my attention, he looks at me। इसे तेरी अख फड़क दिया था, तू रब दा शुक्र कर, तू रब दा शुक्र कर। तेरी बॉडी दे विच कुछ सीगा, कुछ होना सीगा, वो बीमारी सीगी, पर वो जब तेरी अख फड़कन लगी और रब ने तेरी बॉडी के ऊपर एक प्रेशर करता और तेरी बीमारी
Look at it. Look at it. He attentively sort of, oh, push रहा था, गुरुजी मैंने जवाब दे रहा, मैंने कहा था जवाब सवाल तो पूछ रहा. Few days after that, I had a tachycardia. I खब्बे सजे दिखा के, and ultimately I came to Delhi, Batra Hospital. वो कहते तेरा ऑपरेशन करना है कि मैं करूँ. So before I was to be admitted into the hospital, मैं गुरुजी को चला गया, बड़े एम्पायर स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ. I went it ਲਾ लिया, फिर भी ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰਜੀ ਕਮਰੇ 'ਚ. मैं I must take his blessings before I get admitted next morning. This man comes out to me and tells me, who's Karan Toor? I said, yes. And the Guruji ਕਹਿੰਦੇ nothing is wrong with your heart. I can feel my pulse is still 180 beats per minute. And you said, nothing's wrong with my heart. ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ. After some 15-20 minutes, Guruji ਆਏ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਜ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ. And that day, very big samosas, and ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਘਿਓ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, and the size of the samosas were also very. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਰ ਗਿਆ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਸੇ ਖਿਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਪੈਸੇ. ਲਓ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੋਸੇ ਦਿੰਦੇ ਗਏ, ਸਮੋਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ. I say my God. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ. ਸੋ 4-5 ਬੰਦੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, and no prasad, nothing was all. I say how lucky I am. I'm so lucky कि गुरु जी दी blessings भी हो जाएगी और समोसे भी मैं नहीं खाऊंगा. जिस तरह गुरु जी ने मैं मत्था टेकिया, जैसे उठा, 5 समोसे हवा चो लैके मैंने दे दे. मैं बड़े मुश्किल नाल खाई, बहुत मुश्किल नाल खाधे. जद मैं लेके बैठा, फिर 10 मिनट के बाद गुरु जी फिर मैंने बुलाते, 2 समोसे हवा च कट के फिर मैं देती. पूरी संगत देख रही है. मैं क्या हूं जी खाऊंगा ते उल्टी आएगी. माई सिस्टर लॉ पानी का गिलास है तू दे तू खा. गुरु जी कहते सीगे जेड़ा मेरा प्रसाद जेड़ा मंदिर च खाएगा वो है दवाई, जेड़ा घर जाके खाएगा वो है मिठाई. कहना पै मेरे विच, मैं कि कुछ भी हो उल्टी करना अपने वटे दीज गुरु जी हुक्म. मैं 2 समोसे और खा गया. दिल कच्चा, हाँ बाकी बाहर निकल के कमरे थे, लेकिन किसी वोमिट मैं स्वोमिट आउटसाइड. जिस तरह 12 12:30 बजे कहते अंकल की हालत तेरा हूं. You know, feeling my pulse all the time was my hobby. जिस तरह पल्स चलती सी मैं वाहिगुरु कहता. As you feel the pulse, you say वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु. ऐसे काउंटिंग 180 होगी, 122 मिनट काउंटिंग होगी. Because I just came to my mind कि जिस तरह पल्स बढ़ती है तो मैं वाहिगुरु नौ बिच हरिओम का नौ पाऊंगा, so that the entire praise resonate into the blood of God. अगले दिन गया जी अस्पताल. हाँ गुरु जी कहते तू अस्पताल में जाएंगे. हाँ 12 को कहने की हाल है. मैं कहीं मेरी पल्स तो 80 होगी. कहना झूठ बोल दो. मैं कहनी जी मुझे 80 होगी. वो कल अस्पताल जाएगा. मैं कह गुरु जी जिस तरह थोड़ा होगा, तू फौजी है का, तू शक्ति है का, तू जाएगा. मैं कह नहीं गुरु जी जिस तरह तुझी को मैं नहीं जानता, चल तू जाया इधर तसल्ली कर लिया. मैं नेक्स्ट डे आई वेंट, द डॉक्टर एग्जामिन्ड मी एंड he took my BP, पता नहीं से चेंज द BP मशीन. वो ले आया जी BP दोबारा ली. कहते now I will have to carry out your TMT test the very same day. TMT test कितना जी उन्हें. I was almost out for some time on the TMT.
उन्हें बंद करती, मैं की होया, एवरीथिंग ऑलराइट। तो कहता ये तो डॉक्टर साहब ही बताओ, शक पाता ना टेक्नीशियन ने। ਉਹਦੇ बाद फिर मेरी हुई एको, दैट वाज नॉट दैट डे, दैट वाज द नेक्स्ट डे। वो मैं थोड़ी तसल्ली आ गई, आई एम नॉट दैट सीरियस। जब उन्हें एको की, मैं टेबल पे पै गया, तारा लगातियां, एको शुरू हो गया, टेक्नीशियन ही कर रहा सीगा। इन द मीन टाइम 4 डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स चिट्टे कोट पा के मेरे टेबल से ला के सही कर दे। मैं कहा मामला गड़बड़, अदरवाइज जो चंगा हार्ट होंदा हुशोस कोई गल है गड़बड़। अच्छा मेरी अख भी फड़कन लगी। एट दैट मोमेंट मैनू अख भी मेरी फड़कन लगी। मैं क्या गया, because I used to also believe in these things. That very split of a second, I could see myself and recapitulate me and Mr. Sharma sitting in front of Guruji. उन्होंने दोनों चरण दबा रहे थे और शर्मा पूछता क्या फड़क दी है कि गुरु मेरे पास देख के कहते तू रब दा शुक्र कर, तू रब दा शुक्र कर। That came to me, that instinct came to me. Why that instinct at that time when you're worried about everything? ये है गुरु जी की कृपा, ये है गुरु जी की कृपा। गुरु मेरे संग हर नाले। एक then once I used to go to Guruji very often. Once a month मैं जाना ही है। मेरी वाइफ कहती गुरु जी तो जिस दिन चाहते हैं गुरु जी कहते राती रात वापस चलो। और कई दुनिया आती है, कई दिन 4-4 5 दिन बैठाती रहती है। मैं कह there must be some ways of Guruji, why should you worry about this? कहते नहीं, इन्नी दूरों आए फिर एकदम ही गुरु भेज देंगे। एक दफा आए, एक दिन हो गए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन 12 दिन गुरु जी ने भेजा ही नहीं। मैं गुरु जी को जब मैं आ गया कहना ना कल आ जाए, फिर जान 2 दिन मैं गुरु जी आ गया हो, काफी देर हुई, वो तो रिटायर हुआ है, कल दे रखी आ गई। Then one day my wife says कि मैं आज गुरु जी ने पूछी, कहने गुरु जी थोड़ी आ गया हो तो कर जाइए। आंटी तो की कहती सी, वो की दिल च गल रखी हुई सी कि गुरु सन हमेशा वापस भेज देंदा है। सुनी मेरी गल ऐ नहीं, फिर खुश होया करके गुरु जी को ले गुड enough. How did he know my wife? Then उधर फिर दिन गुरु जी वापस भेजता। फिर एक लेडी was pressing गुरु जी's leg in the Empire State and गदा कर के गुरु जी को रो भी रही सी। she was crying, आके मेरे कोले आके बैठ गई, a very sophisticated and a smart lady। मेरे रोन लगी। मैं क्या आंटी आप चंगी जगह बैठे, ये रोन खुशी का मौका है, रोन तक आ। मैं करा कि मेरा हस्बैंड इज इन अ वेरी बिग फर्म, लॉट ऑफ मनी, आई गॉट एवरीथिंग, पर मेरी कुड़ी दी लव मैरिज हो गई सी, डाइवोर्स। मेरे मुंडे दी लव मैरिज हो गई, वो भी डाइवोर्स। कहते मेरे मुंडे ने की तो कुड़ी ने करती, इधर कहती मेरी कुड़ी ने की तो मेरे मुंडे ने करती, डाइवोर्स। व्हाट लाइफ इज फॉर मी। गुरु जी मैंने पूछते तू पाठ भगती करती है, कहती हाँ। गुरु जी कहते तू पाठ भगती करती तो है ना, पर तेरी भगती तेनू लग नहीं रही। That's the first time I came to know if do पूजा पाठ as a ritual नहीं लगनी, ये तो जोत मिला के वो है भक्ति। As a matter of fact, when you start your भक्ति की मैं हम पाठ करना है, the moment you say the word मैं, वो पाठ तुम लगना नहीं कि जिथे तू है तो मैं नहीं है, जिथे मैं तो तू। Understand all this? These are quite, these things are not told, not to be said. They're supposed to be within you. As a matter of fact, जैसे पाठ शुरू करने मैं पाठ करना, yes, ये ठीक है, but a stage comes when it should become a part of your system. वो तो फिर नहीं करना मैं पाठ, अपने आप ही वो पाठ अंदर आना चाहिए। जब वो नेचुरल चीज बन जाती है ना,
then become a part, and puja becomes a part of your system. Like the heart is beating, you do not know it's beating. The kidney is functioning, you do not know the kidney is functioning. Similarly, जब पाठ पूजा करना है, shouldn't be मैं पाठ करे हुए पूजा. As a matter of fact, when you're going from one place to another in the car, यही सोचो कि जड़ी मैं मेरी अगे कार जा रही है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरा गुरु बैठेगा और मैं पीछे पीछे जा रहे हैं. So that your journey is, the time spent on a journey is not wasted. Similarly, at night when you're going to sleep, keep on saying the word. Don't say कि मैं 11 बज के सोनी है, मैं लाइट ऑफ करनी है, मैं कल सवेर जाना. Forget it. Just ना तुसी लाइटां ऑफ कीतियां. Keep on saying the word mentally. वाहिगुरु वाहिगुरु हरि ओम हरि ओम. अपने आप ही ਤੁਹਾਨੂੰ नींद आ जाएगी. जब अख होगी बंद ते जेड़ा तुसी वाहिगुरु किया, हरि ओम किया, it will resonate throughout night in your blood and through your body throughout. So ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਵਾਈ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ. Understand? Now you must make it a practice कि ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਚਲੋ and keep on saying ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, so that every step that you take forward, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ. A stage comes when you don't have to remember कि मैं वाहिगुरू वाहिगुरू करें हरि ओम. Automatically every step that you take forward, the word हरि ओम हरि ओम अपने आप ही थोड़े जिस्म में जाएगा. That is the way of life you got to teach yourself. उन बिना मेहनत कुछ नहीं संगत, बिना मेहनत कुछ नहीं. It is on that day when I came to know कि अरदास दे विच किन्नी भक्ति है. इन्नी भक्ति 20-25 साल मिली, कुछ नहीं मिला. मैं आ कीता, मैं उत्थे गया, मैं आ कीता, मैं आ मंदिर गया, मैं गुरुद्वारे गया, आ कर मैं ही करता रह गया, मैं करते रह, कुछ नहीं मिला. जब मैं कहते हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा ही तेरा, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ सब कुछ मिलने लग गया, सब automatic. So we must keep these things in mind. I know I have taken a very long time of yours. I felt so nice. मेरे घर satsang ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, दुनिया आਉਂਦੀ ਹੈਗੀ. And aim is to ensure that everybody listens to the satsang. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ न्यू ईयर डे के अंदर गुरु जी बहुत सत्संग ਹੁੰਦਾ था. Why? When everybody is busy, why on a new year day की गुरु जी भी सत्संग करती है? एम इसकी नॉर्मली सत्संग ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਲਵਾਂ ਜਾਇਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਡਾਂਸ ਕਰੀਦਾ, ਵਿਸਕੀ ਪੀਦੀ ਹੈ. ਆਈ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਕਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਰਨਲ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ. ਯੂ نو you start criticizing on a new year day कि साल भी तुसी ऐसे कम उठे पुट्टे करके सोचे. So the moment you are with your guru and you're doing your own satsang, you are in different world. You're in that positive world of yours. And like you're all listening to me, I'm also enjoying what I'm talking. जैसे गुरु कहते सी कि तू अपनी संगत करके अंग्रेजी आप ही स्वाद दे रहा, पर आज मैं इंग्लिश भी बोलिया, हिंदी च भी बोलिया, and पंजाबी च भी बोलिया. And remember, Guru मेरी संग करना है. Listen to him. You'll get those messages. Like I got those messages on the steps. So would you. But you got to keep yourself Guru नाल, Guru नाल. तो जदों दुख तकलीफ आए, गुरु शुक्र है तेरा, शुक्र कर. That is और गुरु जी कहते सीगे. थोड़े कर्म दो किस्म, there are 2 types where you can erase your bad karmas. One is by doing bhakti, and second is accepting God's will, good or bad. You're in with him. ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿੰਨੀ ਭਗਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਚ ਕਿੰਨੀ ਭਗਤੀ. when my son lost his hearing, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿ ਜੋ ਹੀ hearing ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਤੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ.
And 4 months after that, he got his 100% hearing back. So Ardas देख ली, शब्द किचन देख लिया. The proof of pudding lies in eating. Okay? And coming to satsang, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਸਤਸੰਗ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, don't leave that opportunity. It's a gift from the Almighty. ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਆਪਣਾ ਇੱਕ CD ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ. Where one Maharaja, where Guru Arjan Dev used to go for a ride in the countryside. And ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ countryside 'ਚ both met together. ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ. बुरे सपने आते हैं, मेरी मौत में मैं पिंड में देख लिया कि उते मर रहा है, मेरी खानदान भी जा रहा है, मेरा खत्म भी जा रहा है, कोई भक्ति कोई फायदा नहीं, कोई पाठ. गुरु जी देख कर मेरे पीछे पीछे चल, जिथे मेरा घोड़ा जाता तू बच चल. After about 10-15 minutes they came across a village, a चौंपड़ी. तो महाराज कहता गुरु जी, this is the dream I got. This is the same hut I got in my dream. आगे कहने इतने कुछ जी टूटा है जी, ये भी मेरे कने ड्रीम च आया सी. सो गुरु जी को गुरु अर्जन देव ने कहते ये जो तीन ड्रीम्स आई है ना, तू सत्संग अटेंड किया हैगा, ये तेरी मौत होनी सीगी, यही तेनू आना सीगा तेरी जिंदगी दे विच. The fact that you do satsang, and you saw this in your dreams, that chapter is over. A new beginning for your goodness has started. ये सत्संग जानता सीगा, हर सत्संग थोड़ी कोई ना कोई, without you knowing, कोई बीमारी, कोई फाइनेंस प्रॉब्लम, कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स, सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो गए. And in the end I would say, मेरे बड़े नशे सीखे, सारे नशे छड़ते, गुरु दी चरना जी दा मौज, satisfaction, contentment, स्वाद. And in the end I would say, गुरु दी चरना दे विच आनंद, आनंद. And finally I would say that if there's any heaven on this earth, it's but